Hello students, welcome to Maths Vidya channel. Today we are going to start a new topic, that is defactorization and factorization formulae of trigonometry. By using this formulae we can find out. Now here we are going to discuss defactorization formula first of all. Now what is mean by defactorization formula? I have written 4 formulae here and we have to remember all these formulae. Now if you observe, first formula is in this way: 2 into sin A into cos B is equals to sin of A plus B plus sin of A minus B. Now what is the use of this formula? This formula is used when there is a multiplication of sine and cos, then multiplication can be converted into addition or subtraction. That is the use of this formula. So first formula is, if sin A into cos B है, then I can write sin of A plus B plus sin of A minus B. Second formula, यहाँ पर क्या change है? Cos comes first and then sin. If there is a 2 times cos A into sin B is there, then क्या होता है, अगर cos पहले लिखेंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. ओके, देन थर्ड फॉर्मूला इज 2 टाइम्स, दोनों एंगल अगर cos है, 2 टाइम्स cos A into cos B है, देन व्हाट इज द फॉर्मूला? cos of A plus B plus cos of A minus B. मीन्स cos के फॉर्मूला में क्या है, दोनों भी टर्म्स क्या है, cos में है. And fourth one is 2 times sin A into sin B is equals to. Now this formula is little different. In these 3 formulae, if you observe, plus is taken first and then there is a minus. But in the fourth formula, change is cos of A minus B is written, then minus cos of A plus B I have written. So in this way we have to study all these 4 formulae and example by using this formula. Now if you want to derive this formula, we can derive this very easily. सपोज हमें फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव करना है, उसको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है. अगर हमने साइन ऑफ A प्लस बी प्लस साइन ऑफ A माइनस बी को सॉल्व किया, ओके, तो साइन ऑफ A प्लस बी का फॉर्मूला आई नो साइन A इंटू कॉस बी, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला आई एम यूजिंग, प्लस कॉस A इंटू साइन बी, ये हो गया साइन ऑफ A प्लस बी का एक्सपांशन, प्लस साइन ऑफ A माइनस बी के लिए क्या लिखेंगे, साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस A इंटू साइन बी. एंड इफ यू ऑब्जर्व हियर, कॉस A इंटू साइन बी and cos A into sin B plus minus gets cancelled, and sin A into cos B, sin A into cos B is taken 2 times, so I derive 2 times sin A into cos B. So in this way I have written first formula as 2 times sin A into cos B is equals to, we can write sin of A plus B plus sin of A minus B, means ऐसे हमने यहाँ पर प्रूव किया है. तो इस वे से अगर हम तीनों भी फॉर्मूला अगर डिराइव करेंगे तो हमें इस वे से आंसर मिल जाएगा. सो राइट डाउन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल. We have started actually the third chapter of trigonometry. In first chapter we have taken allied angle and compound angle. In second lecture or second chapter we have studied multiple and submultiple angle formula, and now this chapter's name is factorization and defactorization formula. For that we have already seen what are our defactorization formula. Now we will come to know what are factorization formula. Okay, so first of all I will write all the 4 formula, and based on that we will take some of the example. Okay, so this chapter is very important from the point of view of our examination, because this chapter is of weightage 8 marks, means 2 questions of 4 marks are asked in examination. So we will write down first formula. Now first formula I will write, if sin C plus sin D is there, means if there is an addition of 2 sine angle, then formula becomes sin of C plus D upon 2 into cos of C minus D upon 2. This is our first formula. Second formula is, if sin C minus sin D is equal
equals to is there, then formula is 2 times, I will write first cos and then sin. Cos of c plus d upon 2 into sin of c minus d upon 2. मीन्स यहाँ पर क्या चेंज हुआ, अगर प्लस है तो साइन एंड कॉस आता है, और अगर माइनस में है तो कॉस पहले और बाद में साइन वी हैव टू टेक. देन थर्ड इज कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लिखेंगे. कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला है 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2. एंड फोर्थ फॉर्मूला इज cos of c minus cos d is equals to, I can write 2 into sin of c plus d upon 2 into sin of c d minus c upon 2. Now change in this formula is 2 times sin of c plus d. In third, all the 3 formula previously I have taken c minus d, but for fourth formula I have to write d minus c upon 2. ओके, और अगर आपको ये चेंज नहीं चाहिए तो यही फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, और में लिखेंगे और माइनस साइन दे दो, बाद में इट बिकम्स साइन ऑफ c प्लस डी अपॉन 2 इनटू साइन ऑफ c minus d upon 2. I will use this formula or this formula, it is one and same thing. Okay, so now what is the use of this formula? Factorization formula are used to convert addition into multiplication. Okay, so you note down this. Let's do this question. This question is of 4 marks which have been asked in summer 17 examination. Now to solve this question, what I will do, either I will start with a whole equation or we can take these 2 terms first of all. Okay, so if I use a formula for sin c minus sin d here, so it becomes sin of 50 degree minus sin of 70 degree plus sin of 10 degree. Okay, now for these 2 terms I am going to use formula. I have one standard formula for this. Sin c minus sin d is equals to 2 times cos of c plus d upon 2 into sin of c minus d upon 2. Okay, so this formula I am going to use for these 2 terms. Means यहाँ पर क्या होगा, c is 50 degree and 70 is d here actually. So our example becomes 2 into cos of c plus d means 50 plus 70 upon 2 into sin of 50 minus 70 upon 2 and plus already क्या है यहाँ पर sin of 10 degrees. Okay, so it is equals to, if we simplify this, 2 into cos of 50 plus 70, it gives you 120 degree upon 2 into sin of, now solve this, 50 minus 70 degree, it gives you minus 20 degree upon 2 plus sin of 10 degrees. Okay, then further if we solve 2 into cos of, it becomes 60, 120 divided by 2, it gives you 60 into sin of, this is divisible by 10, so it becomes sin of minus 10 degree plus sin of 10 degrees. Okay, further cos 60 की वैल्यू क्या है, here we know that cos 60 degree is equals to nothing but 1 by 2. Okay, so 2 into 1 by 2. Okay, then sin of minus 10 degree, यहाँ पर भी एक फॉर्मूला है कि if sin's angle is negative means sin of minus theta, it is equals to minus sin theta. Okay, so this sin of minus 10 degree, it becomes actually minus, and this minus sign I can write here sin of 10 degree. Okay, तो
यहाँ का जो माइनस साइन है वो बाहर लिखा यहाँ पर, ओके, प्लस साइन ऑफ 10 degrees. Then this 2 gets cancelled and this minus sign is multiplied here, so it becomes minus sine of 10 degrees plus sine of 10 degrees plus minus it becomes 0, and which is nothing but our RHS that was to prove. In this way we have solved this question. In this question we have just used our standard formula and put all the values and have done only a simple calculation here. Note down this question. Now this is the question. It is already asked in examination for 4 marks. Now to solve this question we have to show both the sides are equal. Now we will start with LHS because we have standard formula for sin C minus sin D. Okay, there is a minus sign and cos C plus cos D formula I am going to use here. So first of all LHS I will write. Okay, LHS is sin of 3a minus sin a divided by cos of 3a plus cos a. Now to solve such type of question we need to know the formula and we have to learn them. Okay, while solving any question, if you write formula all the time while solving the question, you will be able to remember it very quickly. Okay, so I will write down first of all the formula. Sin C minus sin D का formula लिखेंगे. Okay, so sin C minus sin D is equals to, formula क्या है, 2 times cos of C plus D upon 2 into sin of C minus D upon 2. This is the formula. Okay, and cos C plus cos D का भी formula लिख लेंगे. Cos C plus cos D's formula is, cos C plus cos D यहाँ पे क्या होता है, दोनों भी cos cos में चले जाएंगे. So 2 into cos of C plus D upon 2 into cos of C minus D upon 2. Okay, तो अगर इस टाइप का फॉर्मूला अगर आपको लर्न करना है तो इसे हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं. कैसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि साइन C प्लस साइन D यानी साइन प्लस साइन रहा तो क्या होता है, 2 इंटू S इंटू C मीन्स क्या है, साइन इंटू कॉस, बिकॉज यहाँ पर क्या आता है C प्लस डी अपॉन 2 एंड C माइनस डी अपॉन 2. ओके, S माइनस S रहा तो क्या होता है, 2 इंटू कॉस पहले आता है बाद में साइन आता है. उसके बाद अगर C प्लस C मीन्स कॉस C प्लस कॉस D का फॉर्मूला लिखना है तो क्या होता है, 2 इंटू कॉस आता है एंड C माइनस C यानी cos C माइनस cos D है तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 2 इंटू S इंटू S. ओके, तो ये पार्ट भी अगर आपने लर्न कर लिया तो आपको सब फैक्टराइजेशन के जो फॉर्मूले हैं वो अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ यहाँ पे लिखना क्या होगा आपको, यहाँ पे साइन C प्लस साइन D और ये साइन के साथ C प्लस डी अपॉन 2 और ये कॉस के साथ क्या लिखना है, C माइनस डी अपॉन 2. ये जो एंगल है वो सिर्फ हमें यहाँ पर पुटअप करना है. सो दिस इज द वे टू सॉल्व or to remember factorization formula. Okay, so let's come to the question. Okay, so I have written all the 2 formula which are going to be used in this example. So put here LHS becomes 2 into formula says cos of, यहाँ पर C क्या है, 3a and D is a, so 3a plus a upon 2 into sin of 3a minus a upon 2. Okay, this formula I have written here. Then cos C plus cos D के लिए क्या होगा, 2 into cos of 3a plus a upon 2 into cos of 3a minus a upon 2. Then simplify all these terms. This 2 can be cancelled because remember there is direct multiplication of these 3 terms. So I can cancel this out. Okay, अभी यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करना है, cos of 3a plus a it becomes 4a, 4a upon 2 it becomes 2a. Okay, डायरेक्टली किया हमने.
हमने कैलकुलेशन into साइन ऑफ 3a minus a it becomes 2a और 2 क्या होगा डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा ओके। तो इस वजह से हम सॉल्व कर सकते हैं डिवाइडेड बाय सिमिलरली यहाँ पर भी 3a plus 8 gives you 4a upon 2 it means it becomes 2a so cos of 2a into यहाँ पर क्या होगा cos of 3a minus a 2a and 2 divided by 2 it becomes only 8 and here cos 2a actually gets cancelled and here what remains with us is sin a upon cos a and we know that sin a upon cos a is nothing but equals to tan a. So in this way we can solve this type of question if we know all the formula. This is the formula which is used. Using this formula I will write down this. Okay, so this is all for today's lecture. In next lecture we shall study some of the example based on factorization formula. So keep listening and watching this channel's video. If you like this video, subscribe to this channel and hit the bell icon to get the notification and share with your friends. Thank you for listening and watching.